टड़ा वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेघालय सीरीज़। और आज सैटरडे है, फाइनली वीकेंड, और मैं जा रही हूँ चेरापूंजी, विच इज़ लाइक सो ब्यूटिफुल इन पिक्चर्स। तो मुझे बहुत उत्सुकता है इसे रियल लाइफ में भी देखने की। तो आज वैसे रोमियो के साथ जाने का ही प्लान था, बट उसको कुछ घर का काम आ गया है। नाउ वी आर गोइंग विद हरप्रीत, हु इज़ रोमियोज फ्रेंड। सो येस, लेट्स गो। आई कांट वेट टू शो यू चेरापूंजी। हाय हरप्रीत। Hi. Hi Snehal. Hi. So right now I am at Elephanta Falls, which is very near to Shillong. एंड ऐसा कहा जाता है कि इस वाटरफॉल का नाम पहले था 3 स्टेप्स वाटरफॉल, क्योंकि वाटरफॉल्स 3 स्टेप्स में बहती थी। खासी लोगों ने ये नाम रखा था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसका नाम बाद में रीनेम कर दिया एलिफेंटा फॉल्स में, क्योंकि इसके पास एक रॉक थी जो एलिफेंट से रिजेंबल करती थी। लेकिन अब वो रॉक नहीं है। इट वॉज डिस्ट्रॉयड इन अर्थक्वेक इन 1897। A new place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Okay, so our very first stop in Cherrapunji is MawSaw Dong waterfall, which is located in such a beautiful place, man. Such beautiful landscapes, yaar. I can't even tell you what I'm looking through my eyes. I think मुझे अपने sunglasses निकाल देने चाहिए. It's beautiful, it's amazing. So the entry ticket is 30 rupees per head. So if you are carrying a camera and you have to record the place, you have to give 70 rupees extra. And if you want to have a picnic at this beautiful landscape, beautiful place, you have to give rupees 200. So yeah. Hi Snehal. Hi. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have. I don't think it's that good, क्योंकि यहाँ पे ना लैंडस्केप तो बहुत अच्छा है, लाइक रियली ब्यूटीफुल, बट कुछ भी पानी नहीं है इस टाइम, बिकॉज मे बी अभी बारिश का टाइम नहीं है। सर्दियों में तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ कमिंग, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे टिकट लगता है और यहाँ पे सिर्फ ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, नो डाउट, बट इसके लिए पे करना और टाइम देना, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। मुझे नहीं पता कि मानसून में क्या रहता है। मानसून में शायद इस पर्टिकुलर जगह में पानी रहता होगा, क्योंकि यहाँ पे पानी है, लेकिन इस टाइम यहाँ पे कुछ भी पानी नहीं है। सो येस, इफ़ यू कमिंग इन विंटर्स यू कैन डेफिनेटली स्किप दिस प्लेस, बट नॉनदलेस इट इज़ ब्यूटीफुल, दैट आई हैव टू एग्री। Hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वेरी फेमस WeiSaw Dong वाटरफॉल, और यहाँ पर आने के लिए कुछ भी टिकट नहीं लगता, बस आपको करनी होती है एक लंबी और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हाइक। So that's the way we have to take. It's a bamboo bridge and it's quite tricky. Isnehil, are you ready? To do this. You can do this. Let's go. You will? I'm sure. Okay? Okay. Let's go. Go. Great. Good job, Snehal. Good There job. is something we need. It's a leap of faith. Step away from the comfort zone and be a little brave. So take a look around.
after climbing the scary bamboo bridge, we are finally in the waterfalls, and man, it looks so beautiful, so mystical. Snehal, how are you feeling? How was the experience? The experience was very surreal, very serene, a bit scary. And yeah, it's good. You are afraid of heights. What do you recommend people who are afraid of heights and doing this? Like, they You should. definitely do it because it's a bit scary because you are looking down the stairs all the time and the stairs are made of bamboo and But they're very, very strong. very strong stairs. Very but, strong, yeah. But just one slip and you will be. My God, I don't know about the waterfall. I have not yet seen it. I can only hear the voice. But the whole experience of coming here was really beautiful, unique. A must try. You should definitely come to this waterfall if you're coming to Cherrapunji. Yay! ओके तो हम WeiSaw Dong waterfall में हैं. Definitely a touristy spot. You will see like a lot of people here, but it's definitely worth it. It's beautiful. मतलब अभी winters में यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है. I just cannot imagine कि यहाँ पे monsoon के टाइम कितना अच्छा लगता होगा. So yes, totally recommended. हमने कम से कम यहाँ पे 1-2 घंटे बिताए और बहुत मज़ा आया. और अब हमें फिर से वो बैम्बू ब्रिज और जो भी सीढ़ियाँ हैं बैम्बूज की, उनको चढ़ के जाना है. सो लेट्स सी हाउ दैट गोज़. If there is something we need, it's a leap of faith. A step away from the comfort zone and be a little brave. So take a look around you. How far can you see? How far do you think you can run? Standing on your knees. It's a beautiful world out there. Just don't. Guess what? We found a pure vegetarian restaurant in Cherrapunji, which is so rare. मतलब यहाँ हर जगह नॉन वेज ही है. मेन्यू में वेज आइटम्स बहुत कम होते हैं. So we just thought, because we are very hungry, we thought let's try the food here and let you guys know if you're coming to Cherrapunji and you are looking for a pure vegetarian option. Let's go inside. तो हमने अभी थाली और डोसा खाया. टेस्ट अच्छा था. आप ज़रूर आके ट्राई कर सकते हैं. सब प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग सी बात है क्योंकि प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मैंने तो नहीं देखा था अभी तक. और फूड सही था, सर्विसेज सही थी, रेट्स भी ठीक थे. यू कैन डेफिनेटली ट्राई इफ़ यू आर कमिंग टू चेरापूंजी एंड यू आर अ वेजिटेरियन. तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है अरवा केव्स, जो कि ऑरेंज रेस्टोरेंट के बहुत ही पास है. मतलब आई थिंक अ फ्यू मीटर्स. एंड नाउ वी हैव टू हाइक अ लिटिल बिट टू रीच द प्लेस. सो लेट्स गो. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic.
Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Yeah, yeah, yeah. We are two peas in a pod. सो अभी हम केव से बाहर आए हैं एंड इट इज़ अ नाइस प्लेस, आप आ सकते हैं, पर यहाँ पे कुछ बहुत स्कैरी टाइप का एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा क्योंकि केव्स में लाइट है, गार्ड्स हैं अंदर और लोग भी काफ़ी रहते हैं बिकॉज इट्स अ टूरिस्टी प्लेस. सो येस, यू कैन ऐड दैट टू योर लिस्ट इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ केव्स. इट वॉज अ डिसेंट एक्सपीरियंस एंड येस, आई विल जस्ट शो यू. जस्ट जैसे हम केव से निकलते हैं, दिस दिस व्यू which is super nice. I'll just flip the camera and show you. We both know how to be gentle, never. So now we are almost done with the day and now we are going back to Shillong. But Harpreet, our driver, told us some Khasi word, taught us some Khasi word और वो आपको भी सिखाएंगे खासी वर्ड. क्या बताया था आपने? कुत्ते को क्या बोलते हैं? Ksau. बिल्ली? Kamiao. काम्याऊ. Yes. मुर्गी? Kasiar. कासियार? Yes. कासियार? Kasiar. और गोट? Kablang, no? काबलंग. Yes. Yes. Kablang. Okay, guys. Enough Khasi for today.